Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today is my distinct pleasure to welcome all of you here in front of me, and first of all I want to introduce myself. I am Zainab Batul and my father's name is Abdul Sattar, and I am a student of BS English at Himalayas group of colleges, and it's my 5th semester here. So today I want to present a part of poetry of Iqbal, which name is Shikwa. And first of all, I'll tell you about Allama Muhammad Iqbal. You know very well that I live in city of Iqbal as well. So who is Allama Iqbal? Allama Iqbal, you may say, was a great poet, and he was born on 9 November 1877 in Sialkot, and he worked for the welfare of Muslims. He was a great philosopher, scholar, politician as well. He got his primary education from Sialkot as well, and he belonged to a pious and very noble family. Allama Muhammad Iqbal wrote Shikwa. Just first you have to keep in mind the meaning of the word Shikwa. He wrote Shikwa. The word Shikwa means complain to God. Okay, and he wrote Shikwa because he wanna tell to others the lament. It's a kind of lament and the complaint to the Muslims that they have forgot their moral values. They are not at their highest rank nowadays. So he wrote Shikwa, and now I'll present some stanzas in front of you one by one, and I'll explain the verses and the meanings as well. So here is Shikwa in front of you. Stanza number 1 in front of you. क्यों ज़याकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज़ मेरी ताबे सुहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से हाकम बदहन है मुझको. So, and I'll tell you some difficult words in this stanza. The first words is Fikre Farda, gloom of the evening past. Second one is Mehve Game Dosh, morrows pursue. The third one is Hamatan Gosh, be attentive in the morrow's pursue. The explanation of this stanza, in this stanza, you can say that Allama Iqbal, with a great voice in their harsh words, he says that why I'll not take advantage the dues of mine, why I'll forget it, while I will refuse to take advantages which I have. It's my due. How can I forget it? Fikre farda na karu mehve game dosh rahu. Why not be worried about this? This is my due. How can I deny to take it? Naale bulbul ke sunu aur hamatan gosh rahu. I am not such a person. I am not the one who will always, you may say, keep on listening the lament of the nightingale, the sorrows, the woe of nightingale. I am not the one. Should I need to listen the woe of nightingale? जुर्रत आमोज़ मेरी ताबे सुहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से हाकम बदहन है मुझको. I have enough strength in me because I have tongue, eloquent tongue. I have enough strength in me that I can speak in front of others, and I have eloquency in my tongue, so I can speak without any hesitation in front of all the audiences and the public as well. So शिकवा अल्लाह से हाकम बदहन है मुझको. For example, I am inferior in respect to the God Almighty, whose benevolence, who is, you may say, the one who creates that world. I am not so much superior person. So if I'll complain some type of, you can say, kind of pollution in my mouth, a kind of dust in my mouth, if I'll complain in front of the God, I haven't enough
you may say value in respect to the Allah Almighty. So how can I make complaint in front of my Allah Almighty? So that's the explanation of first stanza. Now we have to move on the second stanza. है बजाज शेवा तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज़े खामोश में फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ए खुदा शिकवायर बाबे वफा भी सुन ले, हु गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले. So I'll tell you here three difficult words which are the part of this stanza. तो सबसे पहले शेवाए तस्लीम, acceptance, to accept. साज़े खामोश, silent instrument, which may be any type of musical instrument like flute, बांसुरी और कोई भी आप कह सकते हैं मौसीकी का आला. अरबाबी वफा, lord of loyalty, वफादार होना, faithful. So now I'll explain the stanza number 2. बंद नंबर 2 है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम. We know very well the value of ours. For example, in the past, Muslims, they have enough, you may say, value the level of superiority as compared to other nations. तो पास्ट में अगर हम माजी की बात करें तो मुसलमानों का जो शेवा रहा है वो अपने ही अमाल की वजह से, अपने ही आप कह लें एक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे. वो अपनी आप कह लें कि सिंपली उनके काम ही ऐसे थे कि उनको किसी की आप कह लें कि किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ की ज़रूरत नहीं थी. सो दे वर यूज्ड टू यू मे से डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्शन. दे वर रिनाउंड एट दैट टाइम. किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है. नाउ इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द पास्ट मुस्लिम एंड नाउ द प्रेजेंट मुस्लिम. सो हेयर किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं. वी आर कंपेल्ड, हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम शिकवा नहीं भी करना चाहते, बट क्या है कि वो हमारी ज़ुबानों पे बिल्कुल आ चुका हुआ है. वी आर कंपेल्ड इन दैट टाइप ऑफ वे. हम उस राह में जो है आप कह लें कि खड़े हैं कि हम वो शिकवा किए बगैर नहीं रह सकते. नाउ वी आर कंपेल्ड अंडर दिस हैज़र्ड. साज़ी खामोश में फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम. The main thing is that here, साज़े खामोश, silent instrument. We are just like that type of instrument, which is an instrument but there isn't any voice in that instrument. हम मौसीकी का वो आला है जिसको बजाने से, जिसको आप कह लें कि उसको प्ले करने से, उसको हम प्ले तो करते हैं लेकिन आप कह लें कि उसके अंदर से आवाज़ कोई नहीं आती. We are useless. We are such a type of instrument, musical instrument, just like flute, which hasn't any voice in it, जिसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है. So you can say that in just it's a kind of comparison, and it's ironically here the instrument is just like the example of Muslims. मुसलमानों की एग्जाम्पल मिसाल जो है इस शिकवा में दी जा रही है. ए खुदा शिकवा अरबाबे वफा भी सुन ले, हु गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले. नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम. माजूर मीन वी आर डिसेबल. First, we have talked about a musical instrument. We are such a kind of instrument which hasn't any voice. Now, for example, if we have some kind of misery, some kind of hardships, so we are unable to tell others that I have such type of hazards and you can say tyranny. I am in trouble. We haven't any enough strength that I can, you may say, tell you that I am in trouble. So next one is नाला आता है अगर लब पे तो मजूर हैं हम. अगर हमारे लबों पे कोई शिकवा शिकायत आ भी जाती है तो हम क्या हैं? मजूर हैं. Helpless. We are helpless. We are disabled in that regard. ए खुदा शिकवा अरबाबे वफा भी सुन ले. So oh Lord, beneficent, we are your faithful persons. We are loyal.
वी हैव सम कंप्लेंट्स. सो हुगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले. सो वी हैव plaint on our lips. So it's a kind of request to Allah Almighty that you have to listen us. You have to just listen the plaint of faithful persons or Muslims. That's it. That's the explanation of second stanza. Next there is the third stanza. थी जो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर ना थी शमीम, शर्ते इंसाफ है ए साहबे अल्ताफ़ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, हमको जमीयत खातिर पर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी. अब मैं आपको कुछ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स बताना चाहूँगी. द वर्ड इज़ ज़ाते कदीम, ओल्ड नेचर. शमीम, फ्रेगरेंस. सेंट, जमीयत, सोसाइटी. थी जो मौजूद अज़ल से, फ्रॉम द प्रीवियस टाइम, प्राइमल टाइम. तेरी ज़ाते कदीम. अब यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात को कहा जा रहा है कि कोई शक नहीं कि तुम्हारी ज़ात उस वक्त से इस हस्ती पे मौजूद है जब यहाँ पे कोई भी नहीं था. देयर इज़न्ट एनी डाउट दैट यू आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम द प्राइमल टाइम. फूल था ज़ेबे चमन पर ना थी शमीम. You are such a type of flower in the primal time, like we can't imagine that it can be present in this world. अल्लाह ताला की ज़ात को यहाँ पे आप कह लें कि उसके बारे में क्या बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी हस्ती एक ऐसे फूल की मानिंद थी कि जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है. शर्ते इंसाफ है साहबे अल्ताफ़ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम. शर्ते इंसाफ, इट्स अ कंडीशन ऑफ जस्टिस. शर्ते इंसाफ ये है बिकॉज इफ़ देर इज़ंट एनी एयर हाउ कैन अ फ्लावर इट कैन ब्लूम. अगर यहाँ पे हवा नहीं है तो एक फूल किस तरह से जो है वो खिल सकता है. So it's a, you may say, condition of justice, but you are such a type of flower that it has a lot of like you can say in the primal time there wasn't any air but it bloomed as well. किस तरह जो होती ना नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी. So we were worried about. So we here we can, you may say, praise our God Allah Almighty, who is you may say benevolent, and we can pray and we can praise our Allah Almighty here in this stanza. So we were not so mad. We haven't you may say such type of passion in ourselves that we can praise to our God. Nowadays you can say the level of our passion, our emotions, our feelings, it minimized. So we are not mad just as before. We haven't you may say any type of craze in the praising of Allah Almighty. So we are, you may say, in that regard we are helpless, and we are disabled in that regard that we can pray to Allah Almighty. So that's all from my side in this shikwa, complaint to God. I explained 3 stanzas in front of you with explanation. So it was a kind of lamentation on the Muslims that they have forgotten their primal and therefore most moral values. That's all from my side. Thank you.